बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक और पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत ही ईजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और जी आज वेजिटेबल पराठा यानी कि कोई भी आपकी सब्ज़ी हो जाए, चाहे वो साग हो या गोभी हो, कोई भी रात की सब्ज़ी जो होती है उससे हम पराठा बना सकते हैं। उसे नई लुक दे के वो यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी। जैसे कि मैंने रात की सब्ज़ी थी आलू और गोभी और उसका मैंने पराठा बनाया। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, उसके लिए हमें यह है कि सब्ज़ी में हमने 2 से 3 चम्मच निकाल लेने, उसको अच्छी तरह से मैश करना है। अगर इसमें सब्ज़ी का कोई आलू या कोई पार्ट रह जाता है तो वो आपका पराठा खराब कर देगा, यानी ख़राब हो सकता है, कुछ हो जाएगा। इसलिए चम्मच से अच्छी तरह मसल लेनी है सारी सब्ज़ी को और इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड कर लें, थोड़ी सी नमक और ऐड कर देना है और आपने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें। आपकी मर्ज़ी। अगर आपके सब्ज़ी में मसाला आगे कम डालते हैं मिर्ची वगैरह, तो इसलिए पराठे में जब सब्ज़ी ऐड करो तो उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस थोड़ा ऐड कर दें। सब्ज़ी को मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी तरह से मैश कर लिया था और अब मैंने एक ही साइज के पेड़े बना लिए थे। इसको मैं थोड़ा सा रोटी टाइप बनाऊंगी, छोटी सी रोटी बना लूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ी और इसी साइज में दूसरी रोटी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। हमारा आराम से रोटी को बेल लेना है।
ये देखिए आपको दरम्यान से रोटी में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि सब्ज़ी को अच्छी तरह मैश कर लूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कुछ आलू इसका तना हुआ रह गया ऐसे। ये कोशिश किया अरे सब्ज़ी जब ऐड करें तो उसको अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि आपका पराठा ख़राब ना हो। माशाल्लाह से मेरी रोटी तैयार है। फिर उसी तरह मैं दूसरा पराठा भी तैयार करूँगी।
कोशिश किया करें पराठा हमेशा घी से ही बनाएं, क्योंकि घी से ही पराठा अच्छा बनता है, ना कि ऑयल से। हमारा तो माशाल्लाह से नाश्ता रेडी हो गया है, और आप भी बनाएं और खाएं। और अपनी दुआओं में याद रखें, प्लीज़ सपोर्ट किया अरे आपकी सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत है। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिले।